We congratulate China on assuming the UNSC presidency for this month, and also welcome convening this annual open debate on the protection of civilians in armed conflict. The world has not forgotten that it was during the holy month of Ramadan in March this year, at a time of peace, reflection and mercy, that Pakistan conducted a barbaric airstrike on the Omid Addiction Treatment Hospital in Kabul. Again, according to UNAMA, this cowardly and unconscionable act of violence claimed the lives of 269 civilians and injured a further 122 in a facility which can by no means be justified as a military target. India remains deeply concerned about the persistent threat posed by cross-border terrorism, which continues to undermine regional peace, stability, and the fundamental principles of international security. India has been a victim of such form of terrorism for decades. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बार फिर भारत की ये दहाड़ सुनाई दी है जो आपने सुनी, लेकिन इस बार मामला सिर्फ कश्मीर या आतंकवाद तक सीमित नहीं था। भारत ने दुनिया के सामने उस देश का असली चेहरा बेनकाब कर दिया जो खुद को मजहब का रखवाला कहता था, लेकिन रमजान के पवित्र महीने में निर्दोषों पर बम गिराता था। जी हां, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, आतंकी मुल्क पाकिस्तान की। अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने जो कत्लेआम मचाया, उसका एक एक हिसाब भारत ने यूएनएससी की खुली बहस में दे दिया, वो भी चीन के सामने। दरअसल इस महीने यूएनएससी की अध्यक्षता चीन के पास पहुंची। विषय था सशस्त्र संघर्षों में नागरिकों की सुरक्षा। और फिर क्या था, भारत ने साफ कर दिया, जब बात नागरिकों की जान की आती है तो भारत की नीति जीरो टॉलरेंस यानी कि शून्य सहनशीलता की है। अब उन्होंने क्या कुछ कहा भारत की ओर से, ये जरा सुनिए। States that sponsor, shelter or support terrorism must be held accountable. India has consistently emphasized that terrorism in all its forms and manifestations remains one of the gravest threats to civilians worldwide. No cause or grievance can justify deliberate attacks against civilians. Mr. President, it is ironic that Pakistan, with its long tainted record of genocidal acts, has chosen to refer to issues that are strictly internal to India. The United Nations Assistance Mission in Afghanistan has reported that in the first 3 months of 2026, 750 civilian deaths and injuries were documented in Afghanistan as a result of cross-border armed violence perpetrated by Pakistani military forces, most of which occurred due to airstrikes. The UNAMA documentation attributed 94 of 95 incidents of civilian casualties to Pakistani security forces. The world has not forgotten that it was during the holy month of Ramadan in March this year, at a time of peace, reflection and mercy, that Pakistan conducted a barbaric airstrike on the Omid Addiction Treatment Hospital in Kabul. Again, according to UNAMA, this cowardly and unconscionable act of violence claimed the lives of 269 civilians and injured a further 122 in a facility which can by no means be justified as a military target. It is hypocritical to espouse high principles of international law while targeting innocent civilians in the dark. The airstrikes by Pakistan occurred at the conclusion of Taraweeh evening prayers when numerous patients were leaving the masjid, as per UNAMA. It bears emphasis that the UN Secretary General called on member states to uphold their international obligations in relation to protection of civilians, including the principle of non-refoulement in the context of Afghanistan. Clearly, Pakistan has chosen to ignore this call completely. As per UNAMA, over 94,000 people were assessed as displaced due to cross-border armed violence perpetrated against Afghan civilians. But such heinous acts of aggression by Pakistan should not come as a surprise from a country that bombs its own people and conducts systematic genocide. During Operation Searchlight in 1971, Pakistan sanctioned the systematic campaign of genocidal mass rape of 400,000 women citizens by its own army. Such inhuman conduct reflects Pakistan's repeated attempts over decades to externalize internal failures through increasingly desperate acts of violence both within and beyond its borders. भारत ने चेतावनी दी कि आज के दौर में तकनीक का गलत इस्तेमाल हो रहा है। शहरों में मिसाइलें, बम और अब ड्रोन्स का इस्तेमाल आम नागरिकों के लिए काल बन रहा है। भारत ने जोर देकर साफ कहा कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के दायरे में होना चाहिए। जैसे ही पाकिस्तान ने भारत के आंतरिक मामले में दखल देने की कोशिश की, भारत ने उसे आईना दिखा दिया। भारत ने अच्छे से याद दिलाया कि पाकिस्तान का इतिहास जन नरसंहार से भरा पड़ा है। खैर, भारत ने साफ संदेश दिया कि पाकिस्तान अपनी आंतरिक विफलताओं को छिपाने के लिए हिंसा का सहारा लेता है, लेकिन अब दुनिया सच जान चुकी है। बिना किसी आस्था, कानून और नैतिकता के चलने वाले पाकिस्तान का असली चेहरा भारत तक आपको
दिखा रहा है। अब मेरा आपसे सवाल है, क्या आपको लगता है अब समय आ गया है कि पाकिस्तान पर इन युद्ध अपराधों के लिए कड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगने चाहिए? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।